Hello students, welcome to CrackGradeB online learning platform. So today we have a special guest, Mr. Palash Jain, and he has cracked IRD Assistant Manager 2023 exam. So first of all, many congratulations, Palash, for this great Thank you, sir. achievement. So today Thank we you, will sir. know your journey, that how you prepared for this exam. So I would like to introduce about Palash Jain, that he has completed electronics and communication engineering, and after that he worked as a cyber security engineer. So Palas, how did you decide, means what made you that you should go for the public sector banking Sir, sector exams? actually, both my parents are also working in insurance PSU. Mm-hmm. So they were also leaning towards, and plus at that time when I graduated and I was starting my private job, COVID was in full flow. तो उस समय पे ऐसा लगा कि ये जॉब का मार्केट काफी dwindle कर रहा था, लोगों के ऑफर्स भी रिवोक हो रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर में एक उस चीज का सहारा रहता है। Mm-hmm. ऑल्दो आई हैड प्लान्ड कि मैं बाद में एमबीए वगैरह करके थोड़ा वापस हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में जाने का ट्राई करूं, बट मैं दोनों चीजें ही ट्राई कर रहा था, तो बट मेरे को पब्लिक सेक्टर फेल्ट बेटर, Mm-hmm. तो आई स्टेड देयर आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम्स। So any other exam you appeared before the IRD assistant manager? So what was your journey towards this exam? Sir, I've appeared for IBPSPO. I have cleared IBPSPO and I've worked with Canara Bank. Mm-hmm. Sam, at the same time, I also cleared ECGCPO of 2021 in generalist. Mm-hmm. So as soon as that came, the result came, so I shifted from Canara Bank to ECGC, and I Mm-hmm. worked in ECGC for 2 years. Okay. Yes, So ECGCPO also is a, I think grade A level post, I think. yes, sir. Then why did you shift towards IRD? The same reason, sir. It is ECGC is an insurance PSU, and IRDI is the regulatory body. So even ECGC comes under the purview of IRDI. Mm-hmm. So working for a regulator is a bigger. I felt like it would give me better opportunities. Plus, it had more horizons of learning as well. So regulatory body is anyway above any regulated entity, in my opinion. So I Okay. went for IRDI. And being a candidate from the north, and you know that IRDA is situated only in Hyderabad. So whole life you have to, means during the your Yes, sir. job, you have to spend only in the Hyderabad. Yes, sir. So actually, I have been associated with South India from many years. So I have completed my engineering also from Bangalore Mm-hmm. for 4 years. And since then, after coming to ECGC, I was posted in Tamil Nadu for 2 years. I've Okay. been posted in Tirupur for the past 2 years. So I've roughly spent around more than 6 years in South India. Okay. So Okay. now it doesn't feel like that Mm-hmm. different once you look at that. Matlab if you experience it closely enough. So let's start your preparation journey, that about phase one, that four sections are there, 40 question each, Yes, sir. 116 marks, and in every section you have to score equal number of sectional marks, means around Yes, sir. 25% it was the last year. Yes, So sir. how did you prepare, and how did you manage in the exam? So first and foremost, I saw that the pattern was there was no sectional timing. Mm-hmm. So actually, when I used to practice for bank exams and also I figured कि I used to take very less time in English and GK, and I was able, so if I was able to complete them within lesser time than the stipulated time given by the exam. Mm-hmm. So I thought I will start for this particular exam. I will finish my English and GA portion as soon as possible and dedicate all the other time in completing the quants and reasoning portion of the exam. So there were 90 minutes and 160 questions. So I think I spent around 10 minutes on GA and I think even less than that, 5 to 7 minutes on GA and 10 to 12 minutes on English. So I was left with 80 questions and 70 minutes. So I was able to tackle those 80 questions nicely. And Mm-hmm. the exam of IRDI phase one, when I have given this in that this year, it was around lower than PO pre-exam. Some Okay. people were saying it is like around RRB PO pre-exam.
So Okay. questions were very doable and the exam was scoring. So if you were able to dedicate your time properly, if you're able to manage your time properly and have a good accuracy, then you have a very good chance of clearing this exam. So that was my go-to strategy. And I think general awareness is not insurance based in this exam. No, sir, This not was completely. normal. Yes, sir. As you will find in any other IBPS exam, like SBI mains or IBPS mains or even ECGC phase one, Mhm. RBI phase one. So I think the paper was similar to that. It was not very insurance specific in phase one. Okay. Now comes to the phase two part that Yes. three papers are there: English, descriptive, economics, and economics and social issue impacting the insurance sector, Yes, sir. insurance and management. So, what were your major sources for this? And it was a So pen first paper and based exam also. yes, sir. So my first and major source was CrackGradeB only. Mhm. I had subscribed for the phase two course of CrackGradeB. So it had all the comprehensive, all comprehensive material and fodder material what you can use for writing good answers in your exam. Rest, I will say I've used some of my self-study as well. I used to research on some topics, new initiatives taken by even by IRDI also. You can look Mhm. them up on the IRDI websites, their regulations or circulars, and what all other type of insurance schemes like Fasal Bima Yojana or Mhm. SBY, JJBY, these types of schemes. So as it is an insurance body exam, so you should be aware about the insurance data as well, like Mhm. how much insurance penetration is there in India, number of people who have insurance, and there are some terms related to insurance like under insurance and things like that. तो उसके लिए मैंने थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी भी यूज किया एंड बट क्रैक ग्रेड भी मटेरियल आल्सो फॉर द syllabus given in the notification. CrackGradeB provided a very good comprehensive material on that. But I Mhm. will still suggest students ki you have to use your own research as well because it stays with you. Yes. Especially at the time of writing exam, if you have studied something अलग से और आपको थोड़ा आपके बैक ऑफ द हैंड में कुछ माइंड में कुछ चीजें हैं तो वो आपको बेटर आंसर लिखने के लिए हेल्प बहुत करती हैं. और ये आपके आंसर को डिफरेंट भी करेगा दूसरे लोगों से, क्योंकि जी कंटेंट सर. सब तो पढ़ रहे होंगे, मोस्टली जी हमारे कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो सब सेम लिखेंगे। तो एग्जैक्टली सर. हाँ। हम्म। तो इवन फेज टू में मैंने जो मेरा तरीका था आंसर लिखने का वो मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया था कि मैं आंसर को आंसर का फ्लो अच्छा रखूं उसमें उसको उसमें डेटा इंक्लूड करूं उसमें कोई इनिशिएटिव हो तो हम्म। वो इंक्लूड करूं. तो उससे एक आंसर को काफी आप अच्छा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका एक साधारण आंसर भी दे सकते हैं आप उसका एक हम्म। अच्छा आंसर भी दे सकते हैं. लेकिन अगर किसी एग्जाम में जिसमें कंपटीशन इतना हाई है तो आई थिंक आपको मतलब जो आप बेस्ट से बेस्ट दे पाए आपको वो करना चाहिए. तो उसके लिए आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखने की थोड़ा बहुत आप नोट्स बनाएंगे तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है और हाथ से लिखने की प्रैक्टिस. प्रेजेंटेशन हम्म। भी मैटर करता है व्हेन यू आर राइटिंग मतलब आप पेन पेपर पे एग्जाम देते हैं तो उन सब हम्म। चीजों का ध्यान रखना मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है. तो एक जनरल क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि उसमें हम जब आंसर लिखते हैं पेन पेपर बेस्ड, तो क्या जी. हम दो कलर के पेन यूज कर सकते हैं? हेडिंग लिखने के लिए कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज करके हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं? और जो शीट होती है वो क्या लाइन वाली होती है या प्लेन पेपर टाइप की होती है आंसर शीट जो? सर पेन का मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि मुझे जितना याद है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि हम्म। आपको कौन से कलर का पेन यूज करना है एंड मोस्टली मुझे जितना याद है कि अगर आपको पेन चेंज करने पे शायद एग्जामिनर का वो लेना था कि आपने पेन चेंज किया है बिकॉज वो हो सकता है ना चीटिंग का इशू क्रिएट हो सकता है. हम्म। तो एक वो चीज थी. तो आपको तो मेरे ख्याल से जहाँ पे भी उसमें लिखा था कि आप अगर कहीं पे कोई पेन चेंज कर रहे हैं तो एग्जामिनर से आपको उसको वो करवाना पड़ेगा ऑथराइज करवाना पड़ेगा. और दूसरी चीज जो कॉपी की बात रही तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग उन्होंने लाइंस दी हुई थी आपको हम्म। कि अगर आपसे बोला है कि आपको 150 150 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है तो उन्होंने अराउंड 15 to 20 लाइंस दे रखी हैं. आप उसमें क्वेश्चन नंबर अपना डालिए थोड़ा सा शॉर्ट में या फिर अगर आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है आप वो भी कर सकते हैं. देन हम्म। आप अपना आंसर उसके नीचे वो गिवन स्पेस में लिखना है. अनलिमिटेड स्पेस नहीं थी एंड लाइंस दी हुई थी. ओके ओके ओके। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि इतने कम टाइम में वर्ड लिमिट को
और वो तो फिर प्रैक्टिस से सर, जैसे नोट्स बना के मैं हाथ से लिखने की काफी प्रैक्टिस करता था, तो उसके हिसाब से पेपर वॉज लेंदी नो डाउट। पेपर खत्म करने में काफी लोगों को दिक्कत हुई, इवन मुझे हुई। मुझे लगता है कि मेरा एक थोड़ा एक आध मैं और बेटर लिख सकता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मुझे जल्दी जल्दी लिखने में लगा। तो अगर हम्म आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है और वर्ड लिमिट्स भी मैच करनी है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। आपको सोचना जल्दी पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे फॉर्म करना है आंसर। हम्म तो वो सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं इसके आईआरडीआई फेज टू एग्जाम के पास 2 बार के, प्लस अगर किसी को, आई थिंक अगर कहीं पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे ही, तो अभी मुझे नहीं याद है कि सर आप क्रैक ग्रेड बी पे अवेलेबल थे या नहीं, तो अगर हम्म उनसे इंसान चाहे तो अपना सिलेबस खत्म करके वो एक खुद से ही क्वेश्चन पेपर टाइप का सोच के, या फिर नोटिफिकेशन में जो वो दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके ऊपर आप एक वो शॉर्ट नोट्स टाइप का 200 से 400 वर्ड्स का लिखने का ट्राई करें हम्म बेस्ड ऑन द टॉपिक। तो उससे आपका काफी अच्छा फ्लो बन जाएगा, आपके हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आजकल मैं जैसे देखता हूँ कि एस्पायरेंट्स को मोस्टली टाइपिंग की आदत ज्यादा होती है। हम्म या तो वो टैबलेट पे लिखने की आदत होगी, या तो टाइपिंग की आदत होगी। हाथ से लिखने वाले अब काफी कम लोग मिलते हैं, एक्सेप्ट हम्म फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स। तो यूपीएससी हम्म एस्पायरेंट्स के लिए भी इस एग्जाम में काफी फायदा था कि उनको अपने फोर्टे में मिला था ये एग्जाम। क्योंकि जनरली कुछ कुछ लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो होती है, तो इसमें वैसा हम्म। बराबर कर सकते थे आप। वो काफी लोग अपीयर भी किए थे इंटरव्यू यूपीएससी बैकग्राउंड के। जी जी जी, इसमें तो काफी तो लोग हैं। क्वेश्चंस का क्या लेवल था, जो स्पेसिफिकली अगर इंश्योरेंस मैनेजमेंट की बात करें और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस सेक्टर? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन का लेवल उतना ऐसे बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, मतलब आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एंड आई थिंक दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। हम्म। क्वेश्चंस ऐसा कोई नहीं था कि किसी क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगे कि यार इसमें लिखा क्या जाएगा, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसके बारे में कभी सुना नहीं। लेकिन हम्म वहीं पे अगर आपको उसके बारे में बहुत ही अच्छा डिटेल्ड में लिखने को बोला जाए, तो अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी होगी तो मे बी आप उतना अच्छा ना लिख पाए जो आपको एक ऊपर लोगों से हम्म भेज दे मार्क्स के सेंस में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो कुछ वैसा पेपर था कि सुना सबने होगा उसके बारे में, लेकिन अच्छे से लिखने के लिए आपको उसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। तो वो ही चीज डिफरेंस क्रिएट कर रही थी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट में। क्योंकि लिख के और अटेम्प्ट करके ऑलमोस्ट सभी आए थे, जितनों से मेरी बात हुई, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड दोनों से। तो आज आपने से एग्जाम क्लियर किया है, तो जी सर। जो फ्यूचर एस्पायरेंट है इस साल जो अपीयर करेंगे उनके लिए क्या जी एडवाइस रहेगी कि उन्हें कैसे आंसर में क्या इंप्रूवमेंट जो आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए थे कि उन्हें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनके आंसर्स में, ताकि वो स्कोर अच्छा मतलब कर सके? सर, सबसे पहले एक तो अभी आजकल जो मैं एस्पायरेंट्स का माइंड सेट देख रहा हूँ कि कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। हम्म। एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मैं ये लोगों से, कई लोगों से मेरी जिनसे बात भी होती है, मैं उनको ही बोलता हूँ कि आपको वैकेंसीज की फर्स्ट ऑफ ऑल चिंता नहीं करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है। क्योंकि हम्म। वो चीज आपके हाथ में, वैकेंसीज आपके हाथ में नहीं है। रही बात आंसर्स की, तो फिर सर आंसर जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना आंसर ऐसा लिखें कि उसमें उसका फ्लो अच्छा हो, फिर देयर इज एन इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी है। और या तो आप उसका शॉर्ट एनालिसिस करें, जो बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस ऑब्जर्वेशन या थ्रेट्स इस तरह, हम्म या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। या फिर मतलब आप जैसा भी एक फ्लो रखते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, उसका आफ्टर मैथ होना चाहिए, उसका कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरह से रखें, उसमें डेटास प्रेजेंट करें जो कि अवेलेबल है। कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे जो अवेलेबल ही नहीं होगी, जो बहुत ही कोई एक इनसाइड डेटा हो। हम्म। आप उसमें स्कीम्स इंक्लूड करें, आप इनिशिएटिव्स इंक्लूड करें। तो ये चीजें आपके आंसर को बहुत बेटर बनाती हैं, रादर देन कि आपने जैसे कोई डेफिनेशन पूछी और आप वो उसको सीधे शब्दों में लिख के आ गए। तो आपको उसके अराउंड एक अच्छा आंसर बिल्ड करने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी मेरे हिसाब ओके। और एग्जाम देने के बाद हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर? से। सर, मेंस लिखने के बाद तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू में तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आई वाज होपफुल। फर्स्ट इस फेज के बाद तो ड्विंडलिंग रहता है थोड़ा, कि पता नहीं, हो हम्म सकता है सेक्शनल थोड़ा सा रह जाए, कि कट ऑफ मेन हम्म ओवरऑल थोड़े से कम रह जाए। बट फेज टू लिखने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन का नहीं पता, बट इंटरव्यू देना मुझे मिलना चाहिए। इसका मुझे 99% से ज्यादा की श्योरिटी थी, क्योंकि मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया था। Okay. So parallelly, you were preparing for other exams as well, like NABARD, RBI Grade B.
Not NABARD. I was only preparing for RBI and IRDAI at that time. Okay, okay. Yes. So what was your journey for RBI? Sir, in RBI, I cleared phase 1. phase 2 मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया. तो अब आई विल हैव टू सी कि मुझे आगे अब क्या करना है. अभी तो IRDI तो ज्वाइन मैं करूंगा ही. Mm-hmm. उसके बाद फिर अगर RBI का मुझे लगता है कि देयर सम मोर लेफ्ट इन मी टू give to that exam, so I will again try for my one more attempt. Okay, now comes to the interview, and interview was at a short notice, I remember. Yes, sir. And also they called number of candidates on a single day. Yes, sir. So what So was your experience? interview experience. So first of all, तो वो था थोड़ा सा तो haphazard था. So what Mm-hmm. had happened was first they had given dates of 15th and 16th September, if I remember. Yes, And but at that time UPSC mains yes. was going on. So many of the candidates who had to give both these things, so they emailed IRDI to consider this, and most of us were expecting to the interviews to be delayed by at least a week or something. But IRDI said no, you have to come 1 week before now. So Mm-hmm. interviews were conducted on 9th and 10th September. There were, I think, 4 or 5 shifts. There were 5 panels, and I think only in 2 days they completed around 250 interviews. So I had my interview on the second day, that is 10th September, on last shift, I think 2:30 p.m. Mm-hmm. So my interview experience, it was around 12 to 15 minutes of interview. They had variety of questions, like you asked about my how am I managing living in South India, being from the northern part of the country. Mm-hmm. Then they also asked me some basics about insurance, what my work in ECGC is, how do Mm-hmm. I deal with that, what kind of work other ECGC does, and some questions related to technology and how do you leverage technology in insurance. So like data science is very important for insurance because insurance is Mm-hmm. mostly dependent on data. So they Mm-hmm. asked me about that. They asked me some questions specific to some specific type of insurance like motor or marine. Mm-hmm. So if you had, so it was a good interview, not no not very much grilling. So 12 to 15 minutes and comprehensive Okay, kind of a okay. discussion. So how much you scored in the interview? I scored sir 86 marks out of 100. Okay, okay. Okay, that is very good score. Yes. But I feel interview I could people have done even much better because recently marks were also released. So Mm-hmm. people even have achieved around 93, 94, 95 marks in interviews as well. Mm-hmm. So if you were able to impress the panel sufficiently, so they were not very they were marking very nicely. Mm-hmm. So and interview marks were also kind of important. Yes, every because vacancies are less, Vacancies 7.25 are less, so you marks, have to achieve 7.25 marks. maximum marks in every phase, Yes. everywhere where possible. So, thank you, Palash, for this wonderful strategy session. So, Thank you, any sir. advice for the future aspirants? One thing I have observed always that for every exam, students start following multiple sources, multiple courses they are subscribing, two, three, fear of failure or fear of missing out. Yes, sir. Yes. So, what is your review? What is your suggestion to future aspirant? Sir, my suggestion is just like I said, self-confidence is very important. Moreover, one should know what works for them. Like people, it is not necessary that what advice I am giving right now or I might have given to Mm-hmm. someone would work for them. सबके लिए एक ही जैसा वो काम नहीं करता है, तो आपको थोड़ा तो ये पता करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है. जैसे मेरी जीए वीक है, हो सकता है किसी की जीए बहुत अच्छी हो और वो क्वांट और Mm-hmm. रीजनिंग में थोड़ा कम करता हो, तो उसे उसमें काम करने की जरूरत है. मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं तो मॉक दे देता था क्वांट रीजनिंग के, तो मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाता था उससे प्रैक्टिस से. लेकिन Mm-hmm. हो सकता है किसी को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हो. तो आपको एक बार तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज, आपकी कमी कहाँ पे आ रही है, आप Mm-hmm. कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो और आप कहाँ पे मैक्सिमाइज अपना सबसे अच्छा आप कहाँ पे दे सकते हो, तो उस चीज को बूस्ट भी करना पड़ेगा. Mm-hmm. और रही बात सोर्सेज की, तो सोर्सेज आप अपना एक सोर्स रखिए और उसके अलावा मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आप खुद से अपने नोट्स बनाइए, आप इंटरनेट पे एक दो सोर्स ट्राई कीजिए, आप समय दीजिए। अगर आप वर्किंग एस्पायरेंट है, जैसे मैंने वर्किंग होने के साथ साथ ये एग्जाम दिए, और हम्म, उसमें भी अपना पूरा समय मैनेज किया, ऑफिस मैनेज किया, घर मैनेज किया, और उसके बाद अपनी पढ़ाई मैनेज करी। तो इट इज नॉट लाइक कि इट इज नॉट पॉसिबल। आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और नेगेटिविटी के बारे में कम सोचें तो वो बेटर रहेगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग फैला देते हैं कि यहाँ तो इसमें ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। ये सब हम्म, चीजें ये बाद की सोचने वाली हैं। जब एक बार आपके जॉब लग जाए, आपके हाथ में कुछ आ जाए, हम्म, लोग उससे पहले ही, उनके मन में ऐसे डाउट ज्यादा होते हैं जो सिलेक्शन के बाद आने चाहिए, हम्म, एग्जाम का फर्स्ट फेज देने से पहले। तो इन सब हम्म। चीजों से बचना चाहिए, मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं भी देख रहा था इस बार आईआरडी ने बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जी जी। बॉन्ड है ये है, मतलब पहले आप सर एग्जाम क्लियर बॉन्ड तो, करो, उस पे फोकस एग्जैक्टली करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है बॉन्ड, हर गवर्नमेंट सर। जॉब में होता है लगभग। एंड आई थिंक इंश्योरेंस पीएसयूज के जो अभी इधर एग्जाम्स आए थे, आई थिंक एनआईएसीएल और एनआईसीएल, उन्होंने तो 10 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी मांगी है वापस। हम्म, 5 साल का बॉन्ड है तो वो तो और बड़ा है। अब अगर वो भी एग्जाम लोग दे रहे हैं तो 6 lakhs का बॉन्ड इज लाइक 3 मंथ सैलरी, आई थिंक, व्हाट प्रायोरिटी फ्रॉम मेरे व्हाट आई हिसाब हैव से हर्ड। प्रायोरिटी शुड बी यूर की गेटिंग ए जॉब, नॉट कि हाँ, योर बॉन्ड प्रायोरिटी कितने शुड बी साल का गेटिंग है। अ हाँ, जॉब। हाँ। और ये सब चीजें उसके बाद आती हैं कि आप हम्म। ये सोचो कि बॉन्ड का क्या है और आगे क्या करना है, वहाँ क्या होगा। वहाँ आप एक बार प्रमोशन हो आ रहा है जाओ, कि उसके नहीं बाद हो रहा है, सोचो। जी। कितने सालों में प्रमोशन होता है। तो ये सब चीज अगर आपको पहले से आपके हाथ में कुछ है और उससे कंपेयर हम्म। करेंगे तो वो भी आपको, वो, वो आप कर सकते हैं। हाँ, वो कर लेकिन सकते हैं अगर आप फेज 1 देने से भी पहले आप ऐसी चीजें सोच रहे हैं कि आज से जॉब लगने के भी 5 साल बाद वो वहां पे ऐसा होता है, तो आई डोंट हम्म। फाइंड इट फ्रूटफुल। वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आपको मोटिवेशन कम हाँ, करती हैं वही आपका। हमने ऑब्जर्व किया कि फ्रेशर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, प्रमोशन कितने साल में हो रहा है वहां पे। एवं जो जी एग्जिस्टिंग जॉब में है उससे कंपेयर करना चाहिए। अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि जी। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू गेट ए जॉब फर्स्ट। यस सर, डेफिनेटली। So thank you, Palash, for this वेलकम सर। nice session, and I wish you good luck for your future journey. And थैंक यू thank you सो very मच। much.